and welcome students. Today we are going to begin a new topic that will be nothing but your chapter number 5 of your standard 9 part 2 geometry mathematics syllabus, that is chapter number 5, as I said, quadrilaterals. Okay, before starting the chapter I'd like to introduce myself again. My name is Petiwala Muhammad Salman. I'm a mechanical engineer from IIT Madras, gold medalist, and I am going to take this particular topic, that is quadrilaterals, for you all. Come on, let's make a beginning to the chapter quadrilaterals. But before going on to quadrilaterals, let us revise what do you all know already about quadrilaterals, right? Quadrilateral क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हमने स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था. First let's have a quick revision and from there we'll take it on. Okay, come on, let's start. So about quadrilateral, you know that if I draw a shape like this, for example, एक random shape बना रहा हूं. This is nothing but a quadrilateral. एक random सा shape बनाया मैंने. This is point A, this is point B, this is point C, and this is point D. Okay. So what is basically a quadrilateral? So quadrilateral is nothing but it is a four-sided figure, right? So first detail about quadrilateral is quadrilateral is a four-sided figure, right? Quadrilateral is a four-sided figure, matlab there are four sides. For an example, in this case the first side will be AB, right? दूसरा side होगा BC, the third side will be CD, the next side will be DA या AD, whatever you say. Okay, so quadrilateral has four sides, AB, BC, CD, AD, right? Fine. उसी तरह से one more detail of quadrilateral is a quadrilateral has four vertices. जिस तरह से देखो, मैंने आपको ट्रायंगल भी मैंने ही पढ़ा है, राइट? ट्रायंगल में मैंने बताया था ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, ट्रायंगल हैज थ्री वर्टाइसेस. उसी तरह से quadrilateral has four sides, quadrilateral has four vertices. What are the vertex या vertices? So these are nothing but the vertices A, B, C, D. A, B, C, D, right? At the same time, guys, you know about a quadrilateral that a quadrilateral has four angles. Angle A, angle B, angle C, angle D. I'll just write that down. Quadrilateral has four angles, right? What are the four angles? Angle A, angle B, angle C, angle D, right? So everything is four. Side four, vertices four, and I can say angles are also four. So guys, this is some basic information about quadrilaterals. Okay, now going further, if you have a quadrilateral, then let us write down the pairs of adjacent sides. Okay, first let us write down something called as pairs of adjacent sides. Now what are adjacent sides? Please pay attention. So हम एक एक करके pair में लिखेंगे. Okay, adjacent sides वो होते हैं जो आजू बाजू में होते हैं. For example, AB and BC, AB and BC ये एक pair है. उसके बाद एक और pair लिख सकता हूँ, BC and CD, BC and CD. Yes or no? समझ में आया? BC and CD. Why? What do you mean by adjacent? एक के बाजू में एक, ये और ये बाजू बाजू में है ना, कनेक्टेड है, बराबर, एक पॉइंट से कनेक्टेड है. जो कनेक्टेड होते हैं, बाजू बाजू में होते हैं, वन नेक्स्ट टू दी अदर होते हैं, उसे कहते हैं adjacent, right? Similarly, you will have the next pair as CD and AD. I can write down the next pair as CD and AD, right? They are connected, बराबर, point D से CD और CD और AD connected है. Similarly, one more pair, that is AB and AD, right? Point A से दोनों connected है, AB and AD, right? So these are nothing but the pairs of adjacent sides. There will be four pairs of adjacent sides in case of my quadrilateral. Okay, fine. जिस तरह से pairs of adjacent side होते हैं, उसी तरह से there are pairs of opposite sides. There are pairs of opposite sides. What do you mean by pairs of opposite sides? So guys, opposite sides are nothing but जो उसके सामने होता है. तो आप कहोगे AB के सामने है CD. So AB and CD are nothing but pairs of opposite side, right? AB और CD एक दूसरे के सामने सामने है. उसी तरह से AD and BC एक दूसरे के सामने, right? So these will be nothing but one another pair of
AD and BC. Right? So this will be another pair of opposite side. Fine. I hope this is clear enough. इतना हमें समझ में आ गया, pair of opposite side, pair of adjacent side. Now let us see pair of adjacent angles. Now after sides, let us go on to angles. So pair of adjacent angles. Adjacent angle मतलब वो angle जो बाजू बाजू में, यानी, and remember adjacent angle will have a common side. Okay. So angle A और angle B की बात करो तो कहना है ये दोनों बाजू बाजू में है, right? So first will be angle A and angle B, right? They are connected by a common side, right? This is a common side. दोनों के बीच में A B common है. उसी तरह से मैं कह सकता हूँ angle B and angle C are also adjacent angles. Angle B and angle C are adjacent angles. One more pair, angle C and angle D, ये दोनों भी बाजू बाजू में, right? Right next to the other. Angle C and angle D are also adjacent angle. And lastly, angle D and angle A are adjacent angle, right? बाजू बाजू में. So angle D and angle A are adjacent angle, right? Pair of adjacent angles. So guys, इस तरह से मैंने pair of adjacent angles भी लिख लिया. Next, let's see the pair of opposite angles. Pair of opposite angles. ये भी बड़ा simple है दोस्तों. Number one, A and C opposite angles हैं, right? So first pair will be angle A and angle C. Second pair will be B and D, opposite angles, right? So this will be nothing but angle B and angle D, right? So with this guys, we have seen a quadrilateral and उस quadrilateral में we have written down four things. चार चीजें हमने लिखी है. Please ध्यान से सुनो. Those four things are nothing but pair of, सबसे पहले adjacent sides लिख लिया, चार pair लिखिए. उसके बाद we have seen pair of adjacent opposite sides, then pair of adjacent angles and pair of opposite angles. Okay, चार चीजें लिखी for this particular quadrilateral. Fine. Now guys, let us start up with the types of quadrilateral. हमें बहुत सारे types of quadrilateral इस chapter में पढ़ने. I'll make a list of them. We'll go to them one by one. एक एक करके जाएंगे. Okay, types of quadrilaterals. So we need to study in this chapter what do you mean by a parallelogram. This is the type of quadrilateral. सुना होगा आज से पहले parallelogram. उसी तरह से we also need to understand what is a one another type of a quadrilateral, that is square. Then we need to study rectangle. Okay, we will go in random order. Okay, करके जाएंगे. फिलहाल सिर्फ नाम लिख देता हूँ. Then we need to study what is a rhombus. Okay, so for this particular chapter we need to study these four types of quadrilaterals: parallelogram, square, rectangle, rhombus. Okay, हम एक एक करके जाएंगे एक पे. Fine. So let us start with the first one now, something called as parallelogram. Okay, what is the basic definition of a parallelogram? Let me draw a parallelogram for you. So guys, what do you mean by a parallelogram? Please pay attention. So guys, a parallelogram क्या होता है पता है? Parallelogram is nothing but it is a quadrilateral. Okay, मैंने parallelogram का diagram बनाया है. I'll name this as A, this as point B, this as point C, this as point D. Okay. Now, what is a parallelogram? Parallelogram एक quadrilateral है. क्यों quadrilateral है? Quadrilateral में देखो चार चीज होती है. चार angle, चार साइड, चार वर्टाइसेस, राइट? तो आप देख सकते हो चार एंगल 1 2 3 4, चार साइड्स 1 2 3 4, चार वर्टाइसेस 1 2 3 4, राइट? सो a parallelogram is, I'll write down the definition. A parallelogram is a quadrilateral. A parallelogram is a quadrilateral in which now here comes the important word, parallel. पैरेलल मतलब आप देख सकते हो गाइस, देख के मैं कह सकता हूं दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी, क्या बात तो एक ही है, राइट? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एज वेल एज यू कैन सी ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, राइट? सो देयरफॉर आई कैन सी अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच the opposite sides are parallel. The opposite sides are
parallel. Remember that. What is the definition of a parallelogram? Definition of a parallelogram is a parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel. Okay, ये इससे parallel, ये इससे parallel. Okay, fine. Concept समझ में आ गया? Fine. Now there are two important properties of parallelogram. जो अभी मैं फिलहाल properties लिखूंगा, फिर उसे हम prove करेंगे. Okay, आगे. So there are two properties. Remember properties. Property number one. Opposite sides. The property number one is like this. Opposite sides and opposite angles of a quadrilateral are congruent. What do you mean by this? इसका मतलब होता है opposite sides, यानी मैं कहूंगा AB will be congruent to CD या DC, one is the same. So first property से मुझे क्या मिल रहा है? That AB is congruent to CD, right? उसी तरह से अगर AB CD से congruent है तो they are nothing but opposite sides. पहले opposite sides से study करते हैं, ठीक है? So opposite sides of a quadrilateral are congruent, यानी this will be congruent to this and BC will be congruent to AD, right? This will be congruent to this. Right? So similarly मैं कह सकता हूँ इसी लाइन में BC will be congruent to AD, right? बराबर. और उसके साथ मैंने लिखा opposite sides and opposite angles, यानी this angle, कौन सा वाला angle? This angle will be congruent to this angle. Why? Because they are opposite angles, right? So angle A will be congruent to angle C, right? और opposite angles तो ये भी है, ये और ये, तो ये दोनों भी congruent हो गए, यानी angle B is congruent to angle D, right? Angles और sides congruent का मतलब equal होता है, right? Fine. So this is nothing but the first property हमने देखा कि opposite sides and opposite angles of a quadrilateral are congruent. Now the second property, guys, the second property is like this. If I go on, let's first write down the second property, then I'll make you all understand. So second property is the diagonals of a parallelogram, the diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect each other. What do you mean by that? You know, अगर ये मेरे पास quadrilateral है तो diagonals मतलब opposite vertices को जब हम join करते हैं तो हमें diagonals मिलते हैं, right? You know that, ये बताने की जरूरत नहीं है. So let's say ये opposite side को हमने join किया, diagonal मिला, diagonal BD, and this will be diagonal AC, right? So you have diagonal BD and diagonal AC. Let's say the common point is some point P, okay? So bisect करते हैं मतलब क्या? Bisect means that the diagonals are divided into two equal parts. Remember, what do you mean by that? I'll write down point number 2 का relation here. That if the diagonals bisect each other, then ये जो diagonal AC है, AC, अगर वो bisect हो रहा है ना, so वो दो equal parts में divide हो जाएगा, यानी the first part will be AP, the second part will be CP, right? So diagonal bisect मतलब diagonal bisect का मतलब होता है, अगर first diagonal की बात करूं AC diagonal की, so I may just write down AP will be equal to CP. हाँ या ना? बराबर बराबर. उसी तरह से if you talk about the second diagonal, that is diagonal BD, तो अगर ये भी bisect हो रहा है मतलब दो equal parts में divide हो रहा है, दो equal parts में divide हो रहा है मतलब this part will be equal to this part, यानी BP will be equal to DP, BP will be equal to DP, right? हम दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे, दोनों प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करेंगे, बट द फर्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट पैरेललोग्राम इज, रिमेंबर डेफिनेशन समझा हमें, पैरेललोग्राम इज नथिंग बट अ क्वाड्रिलैटरल इन व्हिच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके? प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट? उसके बाद हमने देखा डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? फाइन. नाउ लेट अस स्टडी दिस एज अ थ्योरम, इसको हमें प्रूव करना है. So this becomes your theorem number 1. Please pay attention. Theorem number 1 becomes opposite sides and opposite angles
प्रूव करना है हमें, अब तो फिलहाल आइडिया दे दिया था। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are congruent. Okay, so let's prove this out. Fine, let's draw a diagram first. बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं अच्छे से ताकि हमें विजिबिलिटी अच्छी हो। Fine, so this is a parallelogram. Okay, let's name this parallelogram, कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी जो अच्छी लगे। A, B, C, D. Okay, this is a parallelogram A, B, C, D. What do we need to prove? Given तो बाद में लिखता हूँ, या let's start with the given. So given मुझे क्या है, that this is a parallelogram, right? So I can say triangle, quadrilateral ABCD is a parallelogram. ये given है. Remember इस साइन को क्या कहते हैं? This is the sign for quadrilateral. Okay, this is the sign for quadrilateral. What do we need to prove? To prove, दो चीजें प्रूव करनी है, एक चीज नहीं, दो चीज प्रूव करनी है. Number one, we need to prove that the opposite sides are congruent. यानी सबसे पहले मुझे प्रूव करना है AB congruent to CD, और साथ में मुझे ये भी प्रूव करना है, दो पार्ट्स प्रूव करना है. उसके साथ में we can say BC is congruent to AD, right? Secondly, we need to prove opposite angles are congruent, यानी angle A will be congruent to angle C, right? और उसी तरह से we need to prove that the other opposite angle, that is, या तो angle A congruent to angle C कह दो, या तो पूरा लिखेंगे तो भी चलेगा. Okay, you can write down angle A as BAD. So angle BAD is congruent to angle, ये वाला angle is congruent to ये वाला angle, that is BCD. और उसके साथ ABC, यानी ये वाला एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला एंगल. सो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC. फाइन, ओके, फाइन. सो दिस इज नथिंग बट द टू प्रूफ चीज. चार चीजें प्रूफ करनी है. बेसिकली दो ही है एक्चुअली, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, राइट, और सॉरी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट और ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट. ओके, नाउ फॉर दिस देयर इज अ कंस्ट्रक्शन दोस्तों. Let's first do the construction. The construction is, draw the diagonals of the parallelogram, और diagonals कौन से हो गए? AC and BD, right? तो ब्रैकेट में लिख देता हूं AC and BD. And let's start the proof. एक बार diagonals draw हो गए तो हम proof start कर सकते हैं. Come on. Let's start the proof. So पहले diagonals बना देता हूं मैं. I'll make them by different color pens so that it looks good. Okay, दिखना अच्छा चाहिए ना, right? बराबर. एक काम करते हैं, don't need to draw the diagonal. एक diagonal बनाएंगे तो it's sufficient enough. Don't draw two diagonals. एक diagonal बनाते हैं. That is, draw the diagonal of parallelogram. Let's draw the diagonal BD. Okay, bracket में लिखता हूँ BD. एक diagonal बना दिया. Now let's start the proof. ठीक है? First thing you know that since this is a parallelogram, right? Parallelogram में हमें property, definition of a parallelogram is opposite sides are parallel, right? This will be parallel to this. So I can start like this. AB will be parallel to CD. AB will be parallel to CD. What is the reason? You know, opposite sides of parallelogram are parallel. Right? Start definition तो मैं ऐसे ही करता हूं. Okay, fine. So since both of them are parallel, guys, can I say दो parallel lines होती है तो alternate angles are equal, right? So alternate angle के concept से ये ऐसा Z बन रहा है दोस्तों. कहां पर साइड में बना के दिखाता हूं, देखो ऐसा, right? This is something like this. This is point A, this is point B, this is point D, this is point C, right? Z बन रहा है. तो Z बनता है तो ये angle is equal to this angle. So therefore I can say this angle will be equal to this angle. Yes or no? बराबर. So from the concept of Z, angle ABD is congruent to angle CDB.
What is the reason? The reason is angles in an alternate pair. या ऐसा लिख सकते हैं angles in an alternate pair. Angles in an alternate pair. Okay, fine. ये दो angles equal है. उसी तरह से गाइज एक और हमें Z बनते हुए दिख रहा है. कहां पर Z बनते हुए दिख रहा है पता है? अगर हम ऐसा भी देखें तो Z बन रहा है. कैसा? If you look like this and like this, बराबर? इसको ऐसा ऐसा देखो, मेरे फिंगर्स मैंने यहां पर वापस से चलाए, ये भी एक Z बन रहा है. So therefore this angle will be equal to this angle, यानी this angle will be equal to this angle. So therefore I can say angle ADB will be congruent to angle CBD. I'll call this as 1, CDB, right? I'll repeat that again, CDB. Fine. Okay, angle ADB, right? When if it's ADB will be equal to CBD, not CDB तो लिख लूँगा, CBD. Fine, I'll call this as 2. The reason will be same, angles in an alternate pair. Fine. अब जब दो angles equal हो चुके guys, let us try and take the two triangles once and for all. Okay, so अब हम दो triangles consider करेंगे. In triangle, let's consider this first one, ABD and triangle CDB. Fine, ABD and CBD. Fine. Now दोस्तों इन दोनों triangles की बात करूं, so you know you have studied in chapter number 3 triangles how to prove triangles congruent, right? एक चीज याद रख लो दोस्तों, quadrilaterals ये चैप्टर हमें तभी ही समझेगा जब हमें चैप्टर नंबर 3 अच्छे से समझ में आएगा. चैप्टर नंबर 3 नहीं समझा तो quadrilateral नहीं समझेगा, कितनी भी मेहनत कर लो. ओके, क्योंकि they are connected, the concepts are connected. Okay, so if you take these two triangles, let's start like this. Let's prove these two triangles congruent. Okay, so I'll first use this first equation, that is this angle will be equal to this angle, यानी ABD is congruent to angle CDB from 1, right? I'll call this as 1. Already मैंने यहाँ लिख दिया था तो मैं इसको यूज कर देता हूँ. उसी तरह से I'll say ADB is congruent to angle CBD from 2. Okay, now दो angles तो मिल चुके हैं. Can I get one side also? Yes, we can say that this is a common side, right? बराबर. So therefore BD will be equal to BD. या BD will be congruent to BD. What will be the reason? Common side. So ये दोनों triangles congruent हो गए by ASA test, right? So by ASA test, therefore मैं से कह सकता हूँ triangle ABD is congruent to triangle CDB by ASA test. Okay, by ASA test. So दोनों triangles congruent हो गए guys, तो मैं कह सकता हूँ that corresponding angles equal, right? So since these two triangles are congruent, can I say the corresponding angles, यानी इसमें ये वाला और इसमें ये वाला दोनों equal हो गए या congruent हो गए, जो भी कह सकते हैं. So therefore I can say BAD, angle BAD will be congruent to angle, which angle? This angle will be congruent to BCD. हाँ या ना? What is the reason? The reason is CACT, corresponding angles of congruent triangles, right? So this proves your first part, right? Right? This proves your first part. तो first part proof हो गया, यानी actually second part proof हो गया, angle congruent, बात तो एक ही है. उसी तरह से guys, जिस तरह से हमने opposite sides को congruent ऐसा prove किया, similarly we can also prove that ABC will be congruent to ADC. If you join this diagonal, then ये second part prove हो जाएगा, right? तो मैं कहता हूँ अभी मैं prove करने की कोई जरूरत नहीं है. Similarly I can say we can prove. Similarly we can prove what? ABC is congruent to ADC, right? Similarly. अच्छा, तो therefore ये portion हो गया, मैंने prove कर दिया opposite angles congruent. Now how to prove opposite sides congruent? So ये दोनों triangles congruent है, तो therefore I may say this will be congruent to this. Why? Why they will be congruent? Because
करस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट? यहां से अगर मैं ए बी लेता हूं, प्लीज पे अटेंशन, यहां से फर्स्ट टू लेटर्स लेता हूं, तो यहां से क्या आएगा सी डी, राइट? सो देयरफॉर आई मे राइट डाउन ए बी इक्वल टू सी डी या ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, द रीजन विल बी सी एस सी टी. और इफ आई टेक यहां से ए डी ले लूंगा, यहां से फर्स्ट और थर्ड, सो यहां से भी फर्स्ट और थर्ड आएगा, यानी यहां से सी बी आएगा, राइट? सो देयरफॉर आई कैन से ए डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी या बी सी, कह दो, बात तो एक ही है. This is also CSCT, right? Corresponding sides of similar triangles. So therefore ये second part भी prove हो गया that AB is congruent to CD and BC is congruent to AD, right? बात तो वही है, AD congruent to BC, BC congruent to AD, right? So therefore with this I have proved that यहां तक तो मैंने prove कर दिया था कि opposite sides are congruent, opposite angles are congruent, मैंने यहां तक prove कर दिया था. यहां से मैंने ये भी prove कर दिया that opposite sides are congruent, okay? तो पहले angles prove किया, फिर साइड्स प्रूफ किया. सेकंड पार्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली, ओके? सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल थ्योरम, वेरी वेरी सिंपल डेरिवेशन, जिसको जो भी कह दो सिंपल थ्योरम. क्यों? बस एक बनाते जाने का, एक बीच में से लाइन लेने का. सुनो, ध्यान से सुनो, एक रिकैप देता हूं. एक लाइन ऐसा लेने का, ठीक है? वो लाइन लेने के बाद यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल, यहां वाला एंगल, दोनों दो जेड बनने के बाद वील गेट टू पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, राइट? दो इक्वल टू एंगल आ जाएंगे यहां पर, जो मैंने यहां लिखा, बराबर? वो ऑल्टरनेट आने के बाद लुक एट द कॉमन साइड, दैट्स इट. एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, खलास. ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट बाय CSCT, और ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, राइट? CSCT, right? So with this we have completed the first theorem of quadrilaterals. Please go on to copy this down carefully, then we can see the second theorem which will prove the second property, that diagonals of a parallelogram bisect each other.